अस्सलाम वालेकुम। मैं बीएससी इकनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है। तो सबसे पहले उसमें पर्सनल फैक्टर आता है। पर्सनल फैक्टर क्या है? अ बायर डिसीजन ऑल्सो आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द बायर एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। देन मेरे पास एज और उसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस आ जाती हैं, जो कि क्या है? पीपल चेंज द गुड एंड सर्विसेज दे बाय ओवर देयर लाइफ टाइम। टेस्टेस इन फूड, क्लॉथ्स, फर्नीचर एंड recreation are often age related. Buying is also shaped by the stage of the family life cycle, the stage through which families might pass as they mature over time. Marketers often define their target market in terms of life cycle stage and develop for each stage. And traditionally, family life cycle stage include young singles and married couples with children. देन मेरे पास ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन में क्या होता है? पर्सन ऑक्यूपेशन अफेक्ट्स अ गुड एंड सर्विसेज बोर्ड ब्लू कॉलर वर्क्स टेंड टू बाय मोर रग्ड वर्क क्लॉथ, वेयर white collar workers buy more business suits. Marketers try to identify the occupational that have an above average interest in their products and services. A company can even specialize in making products needed by a given occupational group. Thus, computer software companies will design different products for brand managers, accountants, engineers, lawyers, and doctors. देन इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है? पर्सनस इकोनॉमिक सिचुएशन विल अफेक्ट प्रोडक्ट चॉइस, मार्केटर्स ऑफ इनकम सेंसिटिव गुड्स watch trends in personal income, savings, and interest rate. If economic indicators point to a recession, marketers can take steps to redesign, reposition, and recipe their products closely. देन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या होता है? पीपल कमिंग फ्रॉम द सेम सब कल्चर, सोशल क्लास एंड ऑक्यूपेशन में हैव क्वाइट डिफरेंट लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल इज अ पर्सन पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस इन हिज or her psychographics. It involves measuring consumer major IO dimensions, activities, work, hobbies, shopping, sports, and social events. इंटरेस्ट में आ जाता है फूड, फैशन, फैमिली, रिक्रिएशन. ओपिनियंस में आ जाता है आपके पास अबाउट themselves, सोशल इश्यूज, बिजनेस, प्रोडक्ट्स. सो लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल captures something more than the person's social class or personality. It profiles a person's whole pattern of acting and interacting in the world. देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। उसमें क्या होता है? पर्सन बाइंग चॉइसेस आर फर्दर इन्फ्लुएंस बाय फोर मेजर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सबसे पहले मोटिवेशन है, फिर परस्पेशन है, लर्निंग है, बिलीफ एंड एटीट्यूड. तो सबसे पहले हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको मोटिवेशन के बारे में बताऊंगी. मोटिवेशन क्या है? अ पर्सन हैज़ मैनी नीड्स एट एनी गिवन टाइम. सम आर बायोलॉजिकल arising from states of tension such as hunger, thirst, or discomfort. Others are psychological, arising from the need for recognition, esteem, or belonging. Most of these needs will not be strong enough to motivate the person to act at a given point in time. A need becomes a motivate when it is aroused to a sufficient level of intensity. A motive or drive is a need that is sufficiently pressing to direct the person to seek satisfaction. Psychologists have developed theories of human motivation. Then फिर क्या? Two of the most popular the theories of Sigmund Freud and Abraham Maslow have quite different meanings for consumer analysis and marketing. देन मेरे पास परस्पेशन आ जाती है. उसमें क्या है? मोटिवेटेड पर्सन इज रेडी टू एक्ट. हाउ द पर्सन एक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और ऑन हर own perception of this situation. All of us learn by the flow of information through our five senses. सबसे पहले sight, hearing, smell, touch and taste. Then फिर क्या है? However, each of us receive, organize and interprets this sensory information in an individual way. Perception is the process by which people select, organize and interpret information to form a meaningful picture in the world. देन लर्निंग है. लर्निंग में क्या होता है? वन पीपल एक्ट दे लर्न. लर्निंग डिस्क्राइब्स चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. लर्निंग theorists say the most human behavior is learned. Learning occurs through the interplay of drives, stimuli, cause and responses and reinforcement.
देन एंड पे मेरे पास रह जाता है बिलीफ एंड एटीट्यूड। इसमें क्या आता है, थ्रो डूइंग एंड लर्निंग पीपल एक्वायर बिलीफ एंड एटीट्यूड, दिस इन टर्न इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर। बिलीफ इज अ डिस्क्रिप्टिव थॉट that a person has about something. Buying behavior differs greatly for a tube of toothpaste, a tennis racket, an expensive camera, and a new car. More complex decisions usually involve more buying participants and more buyer and deliberation. Figure show types of consumer buying behavior based on the degree of buyer involvement and the degree of differences among brands. देन मेरे पास टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर की। सबसे पहले मेरे पास कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। उसमें क्या होता है, कंज्यूमर अंडरटेक कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर व्हेन दे आर हाईली इन्वॉल्व इन अ परचेज एंड perceive significant differences among brands. Consumer may be highly involved when the product is expensive, risky, purchased infrequently, and highly self expensive. तो ये होती है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। देन मेरे पास है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाई बिहेवियर। उसमें क्या होता है, डिसोनेंस reducing buy behavior occurs when consumers are highly involved with an expensive, infrequent or risky purchase but see little difference among brand. For example, आपके पास consumer buying जो है कारपेटिंग है, उसमें क्या है, may face a high involvement decision because competing is expensive and self expensive, yet buyers may consider most carpet brands in the given price range to be the same. तो ये डेजोनेंस है। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ये भी इसके टाइप है। उसमें क्या होता है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कर्स अंडर कंडीशन ऑफ लो कंज्यूमर इन्वायरमेंट एंड लिटल significant brand difference. For example, take salt. Consumer have little involvement in this product category. They simply go to the store and reach for a brand. ठीक है, कंज्यूमर के लिए मुश्किल नहीं होता, वो जो है इजीली किसी भी स्टोर पे जाके इसको जो है वो परचेज कर सकता है, ले सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास होता है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। ये भी इसकी बाइंग बिहेवियर की टाइप है। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर अंडरटेक वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट बट significant perceived brand differences. In such cases, consumer often do a lot of brand switching. For example, इसकी मिसाल ले लें, वन बाइंग कुकिंग द कंज्यूमर में होल्ड सम बिलीव्स चूज अ cookie brand without much evolution, then evaluate and brand during consumption, but the next time the consumer might pick another brand out of boredom or simply to try something different. Brand switching occurs for the sake of variety rather than because of distinction. सो ये था, हमने बाइंग बिहेवियर पढ़ा है और उसकी जो फर्दर है उसके स्टेप्स हैं, टाइप्स वगैरह वो पढ़ी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।